first son of Sachimata was Vishwarup. He had left home because his parents were planning to get him married, and he didn't want to enter into the great ashram. So he left home and he went, and he had become a sannyasi. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के एक और भाई थे विश्वरूपा, तो वो घर छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनके माता पिता उनका विवाह कराना चाहते थे, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए वो घर छोड़ के संन्यास ले गए. So when the first son Vishwarup left home and took sannyas, then Jagannath Mishra and Sachimata thought, we don't want this to happen to our second son, to Nimai. They thought, if Nimai gets education, it will not be good for him. He may also want to renounce the world. So we won't send him to school anymore. तो जब उनका पहला पुत्र विश्वरूप इस प्रकार संन्यास लेके चला जा चुका था, तो उनके माता पिता ने सोचा कि अगर निमाई को भी शिक्षा प्राप्त होगी तो वो भी इस प्रकार संन्यास ले लेगा, तो हम उसको कुछ शिक्षा प्राप्त होने नहीं देंगे, इसलिए वो उन्हें विद्यालय नहीं भेजते थे. So when Nimai didn't go to school anymore, then he would get into a lot of mischief, and he would do fun, unusual things. Like he would sit in the garbage one day. Mother Sachi came and she found Nimai sitting in the garbage among all the pots which had been thrown out, the clay pots which were used for cooking. He was sitting there with all of this garbage, and Mother Sachi was shocked. Why are you sitting there? तो जब निमाई विद्यालय नहीं जाते थे तो बहुत शरारत किया करते थे. तो एक बार वो ऐसे शरारत कर रहे थे, कचरे की जगह जाके बैठ जाते थे. तो एक बार जहाँ उनके माँ मटके पड़े थे, गंदे मटके, तो निमाई जाके वहां उन मटकों के बीच में बैठ गया. तो माँ सच्ची आश्चर्यचकित हो गई, निमाई आप क्यों इधर बैठा है? And Nimai told his mother, he said, you don't send me to school. How do I know what's pure and what's not pure? I don't know anything. You don't let me go to school. I don't know anything. I don't know what's right, what's wrong. तो निमाई ने अपनी माता को बोला, मुझे कैसे पता क्या जगह साफ है, क्या अशुद्ध है? आप मुझे तो विद्यालय भेजते ही नहीं हो, मुझे कैसे पता क्या सही है और क्या गलत है? So then all the neighbors in the community there in Mayapur, they also told Jagannath Mishra and Sachimata that this is not very good, that you don't let your son go to school. You know, you're worried about him leaving home and becoming a sannyasi, but this is not the way. You have to depend, just see what is the will of the Lord. What is God, the will of Lord Krishna? If Lord Krishna wants your son to leave home, he will leave home. If Lord Krishna wants him to stay at home, he will stay at home. You have to depend on Krishna. You can't just stop him from having education. It's not right. तो जब आस पड़ोसी ऐसे देखते थे तो उन्होंने माँ सच्ची को बोला कि आप निमाई को विद्यालय नहीं भेज रहे हो, ये अच्छा नहीं है, आपको उसे विद्यालय भेजना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए. तो आप डरते हो कि आगे निमाई चल के संन्यास ले लेगा या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको कृष्णा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए. अगर कृष्णा चाहेगा तो आपका पुत्र संन्यास ले लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा. So in this way, Lord Chaitanya, or we can say Nimai, went back to school and he got his education. And later on, Mother Sachi arranged marriage for him. First wife was there, Lakshmi Priya. Unfortunately, while Chaitanya Mahaprabhu was traveling in Bangladesh, at that time, Lakshmi Priya was bitten by the snake. तो इस प्रकार फिर निमाई को विद्यालय भेजा उसकी माता ने, और वो पढ़ाई की और फिर उसका पहला विवाह कराया लक्ष्मी प्रिया से. लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, एक बार निमाई जब बाहर गए थे
तो एक सांप आया और उनको डस के उनका मृत्यु हो गया था। So that she was bereaved, and she had, and after a short time, another second wife was arranged. This was Vishnu Priya. And she was a young girl, daughter of a nice Brahmana family, and she seemed like a natural, very nice wife for Chaitanya Mahaprabhu. So he had a nice wife, very faithful, very chaste, and he had a very loving mother. But Chaitanya Mahaprabhu gave them up to leave home, to become sannyasi. तो इस प्रकार से उनकी पहली पत्नी का मृत्यु हो गया था, फिर उनका दूसरा विवाह किया गया विष्णु प्रिया के साथ। तो उनका पास इस प्रकार से बहुत अच्छी कन्या थी विष्णु प्रिया, एक अच्छे ब्राह्मण परिवार की थी। तो उनके पास माता, अच्छी माता थी, माँ सच्ची अच्छी धर्म पत्नी थी, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़ दिया संन्यास लेने के लिए। So you understand why Nimai left home like this. He had a higher purpose. If he would simply stay at home with his mother and with his wife, then he can keep them in Krishna consciousness. But Nimai has to give Krishna consciousness to the whole world. Therefore, he left the home. तो हमें यहाँ पर लक्ष्य समझना चाहिए कि श्री निमाई क्यों घर छोड़ के गया। क्योंकि अगर निमाई घर में रहेगा तो वो अपनी माँ को और अपनी पत्नी को कृष्ण भावनामृत दे सकता है, लेकिन अगर बाहर जाएगा संन्यास लेगा तो पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को बांट सकता है। Chaitanya Mahaprabhu displays, he taught us his mood in the famous statement, Priti Viti Achayat Nagar Adigram Sarvatra Prachar Haive Mora. The holy name will be chanted in every town and village around the world. तो श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य हमें इस श्लोक से पता पड़ता है कि पृथ्वी के यात्री नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए नाम, कि भगवान का पवित्र नाम विश्व भर के हर गांव हर ग्राम में बोला जाएगा। So Chaitanya Mahaprabhu left the home at the age of 24. He went from Mayapur, he crossed the Ganga, he went over to Katwa. And Katwa is where the ashram of Keshava Bharati is. And it was Keshava Bharati who initiated him into the sannyasa. इस प्रकार 24 वर्ष की उम्र में चैतन्य महाप्रभु घर से निकले और वो सीधे गए कटवा। वहां पर केशव भारती महाराज थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया। Earlier, Mahaprabhu had gone to Gaya, and in Gaya he had taken diksha from Ishwarapuri. तो पहले चैतन्य महाप्रभु गया गए थे और वहां उन्होंने दीक्षा ली थी ईश्वरपुरी से। When he came back from Puri, he came through a place called Kanai Natsala. Kanai Natsala is a place now in what's called Jharkhand, the state of Jharkhand. But anyway, Kanai Natsala, we have ISKCON temple there now. It's very, very special place. Chaitanya Mahaprabhu came from Gaya to Kanai Natsala, and there he had darshan Krishna. He saw Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु जब गया से निकले तो वो एक स्थान पर आए थे, कनाई नाट्यशाला। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मंदिर भी है वहां पे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां कनाई नाट्यशाला में आए, वहां उनको कृष्ण का दर्शन हुआ। So because he'd been initiated into the chanting of the holy name, previously Nimai had been a scholar. He'd been teaching Nyaya, logic, but now he's become a
devotee, and he just wants to chant the holy name of Krishna. And he's in ecstasy, thinking of Krishna and chanting the holy name and discussing topics of Krishna. तो पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की रुचि न्याय में होती थी, वो न्याय पढ़ाते थे, तर्क वितर्क करते थे, लेकिन अभी वो भक्त बन गए जब गया से आए। वो कृष्ण का नाम लेने में उनको रुचि था और हमेशा परम आनंद में रहते थे कृष्ण का नाम लेते हुए और कृष्ण कथा कहते हुए। So he stayed at home for some time after his initiation, but then he decided it was time for him to leave the home and go out and go to preach and give the holy name. तो वो कुछ समय घर में रुके दीक्षा के बाद, लेकिन फिर उन्होंने ये तय किया कि अब सही समय है घर से निकल जाने का और दूसरों को जाके भगवत नाम देने का। But Chaitanya Mahaprabhu did not encourage other people to follow his example. Rather, he taught people to stay in whatever position they're in and to hear about Krishna in the association of devotees. चैतन्य महाप्रभु ने जो किया, उन्होंने दूसरों को वो करने के लिए प्रभावित नहीं किया कि घर छोड़ने के लिए। उन्होंने दूसरों को कहा कि आप जो स्थान में हो उसी स्थान में रहो, परंतु कृष्ण के बारे में सुनो, भक्तों का संग करो। Just like Chaitanya Mahaprabhu, at one point he went to Kurmakshetra. Kurmakshetra is when you come out from Jagannath Puri and go to south, going towards Vishakhapatnam. Halfway between Puri and Vishakhapatnam, there's this wonderful temple, ancient temple called Kurmakshetra, which had been really renovated by Ramanujacharya. तो जब हम पुरी से निकलते हैं तब विशाखापट्टनम और पुरी के बीच में ये स्थान आता है कुर्म क्षेत्र। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ गए थे कुर्म क्षेत्र में, वहां पर एक बहुत सुंदर मंदिर है और उस मंदिर का पुनः सजावट किया था श्री रामानुजाचार्य ने। So Mahaprabhu came to Kurmakshetra, and the nice Kurmakshetra Brahmin brought him to his home and fed Chaitanya Mahaprabhu and honored him. And then when it came time for Mahaprabhu to leave, this Brahmana said to Chaitanya Mahaprabhu, "Take me with you. I cannot tolerate any more the pains of material life. Let me go with you." तो चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण ने अच्छे से चैतन्य महाप्रभु का सत्कार किया, उन्हें प्रसादम खिलाया और फिर जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, उस ब्राह्मण ने कहा, आप मुझे अपने साथ ले जाओ, ये भौतिक क्लेश को मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। But Chaitanya Mahaprabhu got angry and he told him, no, this is not the way. He said, Yari deki tari kaho Krishna upadesh amara gaya guru hana karaye desh. Wherever you go, wherever you meet, you tell them about Krishna. And in this way, you become a spiritual teacher. तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को कहा, नहीं, आप ये जो छोड़ के जाने का बात कर रहे हो, ये सही तरीका नहीं है। तो उन्होंने फिर ये श्लोक कहा कि यारे देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु होना तारो ही देश, कि आप जिससे भी मिलते हो उसको कृष्ण के विषय में उसको बताओ। Mahaprabhu didn't want him to leave home. He said, you stay here, but you tell people about Krishna. महाप्रभु नहीं चाहते थे कि तुम घर छोड़ो, उन्होंने कहा आप यहीं रहो, लेकिन दूसरे लोगों को कृष्ण के बारे में बताओ। Another person who also got instruction from Mahaprabhu was Raghunath Das. Raghunath Das was the son of, he was born in a very wealthy family. His father and his uncle were maintaining all the brahmanas in Bengal. And that's including both East and West Bengal.
There was one Bengal in the time. तो ऐसा ही आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला था श्री रघुनाथ गोस्वामी को। तो उनका जन्म एक बहुत ही धनी परिवार में हुआ था। इतना धनी परिवार था कि उनके पिता देखभाल करते थे बंगाल का, यानी पूर्व बंगाल और बंगाल ऐसे अलग नहीं होता। So Raghunath Das wanted to leave home, but he had a young wife and his family was very rich. He said, no, I want to go and be with Mahaprabhu. But Chaitanya Mahaprabhu told him, no, you stay at home. He says, don't be asahaja. Don't make everything so cheap. Go home and behave like a normal person. Keep Krishna in your heart and remember Krishna. रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भी एक पत्नी थी, तो वे भी चैतन्य महाप्रभु को बोले थे कि उनको घर छोड़ के जाना है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, आप घर में रहो। ये सब चीज को इतना सहज मत बनाओ, आप घर में रहो, एक सही सज्जन की तरह घर में रहो और हृदय में कृष्ण को याद करो। So you have to understand the teachings of Mahaprabhu. That Mahaprabhu's followers, mostly, they were in the family life. And Lord Nityananda, he had 2 wives. He had children also. He had a son, Virabhadra. He had a daughter, Ganga Devi. तो हमें चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के जीवन से सीखना है। उनके अधिक अनुयायी गृहस्थ थे। नित्यानंद प्रभु की भी 2 पत्नियां थी। Maharaj, the name of the daughters? Ganga Devi and वीरचंद्र और गंगा देवी, उनके संतान भी थे नित्यानंद प्रभु। Virachandra, he never married. He stayed brahmachari. So after Virachandra, there was Virabhadra, right? Virabhadra. Thank you. Virabhadra. Not Virachandra. So Virabhadra didn't marry, he stayed brahmachari. So that was the end of the line of Lord Nityananda. वीरभद्र ने विवाह नहीं किया, अब वे ब्रह्मचारी रहे, तो वहां पर भगवान नित्यानंद प्रभु का वंशज समाप्त हुआ। Some people claim Nityananda Vamsha, right? You hear the Nityananda Vamsha, they say they are the descendants of Lord Nityananda. No, they have some connection. Maybe they're from the village where Lord Nityananda at past times, maybe they were initiated in that line coming through Lord Nityananda, but there was no direct descendant after Lord Nityananda's first son, the Virabhadra. तो हमने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि हम नित्यानंद वंशज से थे। शायद उनका कोई संपर्क रह सकता है नित्यानंद प्रभु से, शायद वो उसी गांव से थे जहां नित्यानंद प्रभु थे, परंतु वास्तव में जो उनका वंशज है वो वीरभद्र के बाद नहीं बढ़ा, क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया। They claim they are the authorized descendants of Lord Nityananda. So we say, all right, then do the work of Lord Nityananda. Go and deliver Jagai and Madai. तो बहुत लोग हैं वो कहते हैं हम नित्यानंद वंशज हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर आप नित्यानंद वंशज हो तो जो नित्यानंद प्रभु ने किया वो काम करो, जाके जगाई और मदाई का उद्धार करो। Don't just sit and say we're the acharyas because we're born and through in the line of Nityananda. You have to do the work of Lord Nityananda. Just as we know, Lord Nityananda was going with Haridas. Priti gari gari giya koro e biksha. Bolo Krishna, bhajo Krishna. तो जो लोग कहते हैं कि आप नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं, आप खाली ऐसा बोल के अपना घर में नहीं बैठा रहो, जाओ जाके जगाई मताई का उद्धार करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ये आदेश दिया था नित्यानंद प्रभु के प्रति, घरे घरे जाओ, करो ही भिक्षा, भज कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। So Lord Chaitanya Mahaprabhu's followers were people like Lord Nityananda. Advaita Acharya, he had 6 sons. 6 sons.
His wife was Sita, she was also a great devotee. Advaita Acharya had 6 sons. Oldest son, Achyutananda, was a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. तो श्री इस प्रकार हम नित्यानंद प्रभु से देखते हैं। फिर अद्वैत आचार्य भी थे, उनके 6 संतान थे और उनका सबसे बड़ा बेटा था अच्युतानंद। तो वो बहुत ही महान भक्त था श्री चैतन्य महाप्रभु। Advaita had 6 sons. 3 were devotees and 3 were asara. Means they were smarter Brahman. They were not the Vaishnava. They didn't embrace the Vaishnava philosophy. Rather, they took the smarter. So अद्वैत आचार्य के 6 बेटे थे, 3 वैष्णव भक्त थे और 3 असार थे, यानी कि वो स्मर्त ब्राह्मण थे। उन्होंने वैष्णव सिद्धांत को नहीं अपनाया, वे स्मर्त ब्राह्मण रहे। But 3 were very great devotees, and they were very much full faith in Chaitanya Mahaprabhu. So much faith that when Achyutananda was a young boy, a young child of only 4 years old, when he heard that Mahaprabhu had been initiated into sannyas, he said, Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. How can anybody become his guru? अच्युतानंद इतने महान भक्त थे, जब वो 4 वर्ष के थे, उन्होंने सुना कि महाप्रभु ने संन्यास लिया है, तो उन्होंने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनका कोई कैसे गुरु बन सकता है। So Chaitanya Mahaprabhu had many followers in the Grihastha ashram, but they were great devotees. Advaita Acharya is also the personality of Godhead. He is the expansion from Mahavishnu. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बहुत अनुयायी थे और वो महान भक्त थे। अद्वैत आचार्य भी महाविष्णु के अवतार हैं। Srivas Pandit, Chaitanya Mahaprabhu performed many of his leela in the home of Srivas Pandit. Srivas Pandit was also in the family line, but he is the expansion of Narada Muni. फिर हम देखते हैं श्रीवास पंडित भी, उनके घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु की बहुत लीलाएं होती थी और वो भी गृहस्थ आश्रम में थे, वो नारद मुनि के विस्तार हैं। And another great devotee who is also in the Grihastha ashram, Ramananda Rai. Ramananda Rai met Chaitanya Mahaprabhu on the banks of the Godavari, and they had wonderful talks there. And Mahaprabhu requested Ramananda Rai, come back and live with me in Jagannath Puri, and together every day we can discuss Krishna. एक और महान भक्त जो गृहस्थ आश्रम में थे वो थे रामानंद राय। गोदावरी नदी के तट पे उनका संवाद हुआ था चैतन्य महाप्रभु के साथ, और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आमंत्रित किया था, आओ मेरे साथ आके पुरी रहो, वहां पुरी में हम प्रतिदिन कृष्ण कथा पे वार्तालाप कर सकते हैं। When Chaitanya Mahaprabhu met Ramananda Rai, Mahaprabhu would put the questions to Ramananda Rai. Ramananda Rai said, hey, this is not right. He said, you're the Brahmana, you're from the Brahmana family, and you're the sannyasi, and I'm low class. I'm like a Sudra almost. Yeah, he's some lower caste person. Although he was highly educated, he was Rudra, and he was the governor of the whole southern region there, which was all part of Utkal. At that time, the king of Puri was ruling all of Utkal, and the southern region was in charge of Ramananda. तो श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछते थे और उनको उत्तर देने के लिए बोलते थे। तो रामानंद राय ने कहा, ओ ये सही नहीं है, आप ब्राह्मण परिवार से हो, आप सन्यासी हो, आप मुझे कैसे बोल रहे हो जवाब देने को। वो कहते थे वो तो निम्न परिवार से हैं, हालांकि वो बहुत शिक्षित थे, वो महाराज प्रताप रुद्र के नीचे उन काम करते थे, और जो उत्कल उस भाग का नाम है, उसके दक्षिण भाग का नियंत्रण रामानंद राय के हाथ में था। But Chaitanya Mahaprabhu said,
Kiba Vipra Kiba Nasi Sudra Kini Nai Ye Krishna Tattvavet Se Guru Hoy, right? Se Guru Hoy. The qualification to be the spiritual teacher, to be the guru is, it's not that you have to be a Vipra or a sannyasi. You may be a Vipra, you may be a sannyasi, you may be a grihasta, you may be Sudra, but if you know Krishna Tattva, then you can become the spiritual teacher. फिर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को ये श्लोक कहा कि किबा विप्र किबा न्यासी श्लोक कहने में ये कृष्ण तत्व से गुरु हुए कि आप शायद विप्र हो सकते हो, जानकार हो सकते हो, लेकिन गुरु होने की योग्यता ये है जिसको कृष्ण तत्व के बारे में पता है, वो व्यक्ति गुरु हो सकता है. The birth is not the qualification. Somebody may be Brahmana by birth, they may be meat eater, they may be drunkard. You don't know what is the habits today. Kali Yuga Brahman. तो कोई जन्म से ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन साथ में वो मांस खाने वाला हो सकता है, शराबी भी हो सकता है. हमको क्या कार्य करना है वो पता नहीं है. तो इस प्रकार अभी कलयुग ब्राह्मण भी बहुत है. So Srila Prabhupada, in establishing the Krishna consciousness movement, he made it very clear that we should follow these four principles, the four pillars of religion. तो श्रीला प्रभुपाद जी ने ये बहुत महत्व दिया कि इस कलयुग में जो चार धर्म के सिद्धांत हैं, जो चार स्तंभ हैं धर्म के, उनका पालन करना चाहिए. The four pillars: Satyam, Socham, Daya, Tapa. ये चार स्तंभ हैं धर्म के: सत्यम, शौचम, दया और तप. And by following our four regulative principles, this way we can preserve some pillars of religion. और इस प्रकार ये चार नियमों का जो हम पालन करते हैं, इनका पालन करके हम धर्म के चार स्तंभ की रक्षा कर सकते हैं. Chaitanya Mahaprabhu encouraged people in their family life. There was one of his devotees, Shivananda Singh. His wife, Shivananda Singh's wife, was carrying a child in her womb. And Chaitanya Mahaprabhu saw, oh, the wife of Shivananda Singh is going to have a baby soon. And he told Shivananda Singh that when your wife gives birth to the child, you give it this name. And Mahaprabhu named the child. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उत्साहित करते थे गृहस्थों को भी. एक और भक्त थे जिनका नाम था शिवानंद सेन. तो उनको पता पड़ा कि शिवानंद सेन की धर्मपत्नी गर्भवती थी, कि गर्भ में शिवानंद का बच्चा था. तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ओ जब तुम्हें ये बच्चा जन्म लेगा तब उसे ये नाम देना. चैतन्य महाप्रभु ने Haridas, when Mahaprabhu heard that Junior Haridas had gone and begged some rice from a woman, then Mahaprabhu was very upset. And he said he should never come in my association again. He rejected him. परंतु जब छोटा हरिदास जो थे, जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मालूम पड़ा उन्होंने एक महिला के पास जाके चावल की भिक्षा मांगी है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी दोबारा छोटे हरिदास को मेरे संग में मत लेके आना. उन्होंने उसका त्याग किया. So Mahaprabhu was not against people being in family life, but he was against hypocrisy. That if somebody is dressing in the renounced order of life, but at the same time keeping material desires, then this is very wrong. तो चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम के विरुद्ध नहीं थे, वो धोखा छल कपट के विरुद्ध थे. कि कोई सन्यासी के कपड़े पहने हुआ है लेकिन मन में भौतिक इच्छाएं पाल रहा है, तो ये बहुत गलत है. So we have to understand the mood of Mahaprabhu, that he wants all of us to advance in consciousness of Krishna. तो हमें चैतन्य महाप्रभु की मनोभावना समझनी चाहिए. वो चाहते हैं हम सब कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें. And we can advance in any position, in any condition. It doesn't matter what ashram you're in. You can make spiritual advancement.
by chanting the holy name and engaging in devotional service. और हम कोई भी आश्रम में क्यों ना हो, हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। ये इस पे निर्भर नहीं है हम कौन से आश्रम में हैं। यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें और भक्ति के कार्य में लगे, हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। Srila Prabhupada had some interesting encounters. One time, Prabhupada was in Hong Kong, and this one Indian man came. He was an Hindi man, actually. He came to Prabhupada, and he said to Prabhupada, he said, Swamiji, I want to take sannyas. So Prabhupada was surprised, unusual. Somebody in Hong Kong, very materialistic place. And so that somebody's coming, want to take sannyas, and Prabhupada looked at him and said, why? And the man said, oh, I have a wife and 4 children at home. It's terrible. I want to take sannyas. तो एक बार हांगकांग में शिला प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को कहा, ओ शिला प्रभुपाद, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो शिला प्रभुपाद आश्चर्य में पड़ गए कि हांगकांग जैसे शहर में आके कोई संन्यास मांग रहा है। हांगकांग तो बहुत भौतिक इंद्रिय तृप्ति वाला शहर है। तो फिर उन्होंने शिला प्रभुपाद को, उस व्यक्ति ने कहा, ओ शिला प्रभुपाद, मेरे पास एक पत्नी है और 4 बच्चे हैं, मैं परेशान हूँ, संन्यास ले लूं। So of course Prabhupada didn't give that man. तो बेशक शिला प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को संन्यास नहीं दिया। But another time Prabhupada was in Vrindavan, and one man came from Orissa. This man came and he also said to Prabhupada he wanted to take sannyas. This Prabhupada initiated him, and later on he gave him sannyas also. This was Gaur Govinda Swami, who was a disciple, one of my god brothers, a disciple of Srila Prabhupada. तो एक बार ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी के पास ओडिशा से एक व्यक्ति आए और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को कहा कि मुझे संन्यास दीजिए, और शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें संन्यास दिया। और ये थे हमारे हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो महाराज की गुरु भाई। So Prabhupada could understand the mind, the mentality, the thinking of the person. What is their motive in taking sannyas? Are they thinking to renounce the world just to become irresponsible, or do they have a genuine desire to want to do more service for Lord Krishna? तो शिला प्रभुपाद के पास वो समझ थी कि वो व्यक्ति का इरादा क्या है, वो समझ लेते, उसका लक्ष्य क्या है। क्या वो संन्यास लेना चाहता है गैर जिम्मेदार बनने के लिए, या वो भगवान की और सेवा करने के लिए संन्यास लेना चाहता है। When Mahaprabhu took sannyas, his mood was like that, to do more service for Lord Krishna. जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, उनकी मनोभावना ऐसी थी कि वो कृष्ण के लिए अधिक सेवा करें। So now is this auspicious month of Kartik, which is a very, very powerful time for all of us to make advancement and to develop more devotion for Lord Krishna. तो अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हम जिसमें हैं कार्तिक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये महीने में हम अधिक प्रगति कर सकते हैं कृष्ण भक्ति की ओर। And of course we do the worship of Lord Krishna in a very simple manner. Just simply we sing the Damodar Astakam song as we sang just earlier, and we offer also the lamp to the Lord. और हम इस प्रकार से इस महीने में भगवान की सेवा बहुत सरल तरीके से करते हैं। जैसे कुछ समय पहले दामोदर अष्टकम आपने गाया और फिर भगवान को कीर्तन किया। And we don't just do it one day, but we do it every day for this month of Damodar. और हम केवल ये एक दिन नहीं करते हैं, दामोदर महीने में ये हर रोज करते हैं। And many of us will do it morning and evening. Not just only in the evening, but we can do it in the morning, we can do it in the evening. और हम में से बहुत ये केवल शाम को नहीं, शाम को भी करते हैं और हम सुबह में भी कर सकते हैं। So this very special month of Damodar is
glorified by all the acharyas. It's a great opportunity for everyone to get rid of bad habits. Bad habits keep us away from Krishna, but the good habits help to bring us to Krishna, to remember Krishna. तो इसलिए ये बहुत विशेष महीना है, आचार्य इसका गुणगान करते हैं कि इस महीने में हम अच्छी आदतें कर सकते हैं। अच्छी आदतें हमको कृष्ण के करीब लाती हैं और बुरी आदतें हमको कृष्ण से दूर ले जाती हैं। If you do something every day for a month, as we're doing this Damodar month, then it becomes a habit. And this is what we want people to do. We want you to develop the habit of worshipping Krishna. अगर हम एक काम हर रोज करते हैं, जैसे पूरा ये महीना हम करते हैं, तो आगे चल के हमारी आदत बन जाती है और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को ये आदत लग जाए कि कृष्ण की पूजा करने की। This month of Kartik, it's the final month of the Chaturmasya, the four months of austerity. And in this final month of Kartik, we make a vow. Especially, we don't take any, Prabhupada, they don't take earth dal. We shouldn't take the earth dal during this. You should not take any meat. You shouldn't take any fish. Right? You shouldn't take these things or eggs during this month. You should be a very strict vegetarian, even though you may sometimes be non-veg. But this month of Kartik, you want to be very strict and not take any of these foods, because it will give you a lot of punya, a lot of benefit. तो इस प्रकार से कार्तिक मास चतुर्मास्य का आखिरी महीना है। चतुर्मास्य जो होता है उसमें कार्तिक, और शिला प्रभुपाद जी विशेष करके हमें कहते थे कि इस महीने उड़द दाल नहीं खानी चाहिए और इस महीने मांस भी नहीं खाना चाहिए, मच्छी भी नहीं खानी चाहिए। तो अगर कोई है जो वरना मांस मच्छी खाते हैं तो कम से कम इस महीने तो मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, इससे हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। We don't say no rice. That's although today is Ekadasi, right? Ekadasi, we don't take rice. That's just one day. No rice. Very difficult, we know, for Bengalis. Right? No rice. And no fish is also difficult for Bengalis. तो हम नहीं कहते कि कार्तिक महीने में चावल नहीं खाओ, नहीं चावल खा सकते हैं। आज एकादशी है, केवल एक दिन हम चावल नहीं खाते, वो आसान है। तो बंगालियों के लिए चावल छोड़ना और मच्छी छोड़ना तो थोड़ा कठिन बात है। So this is a little tapasya, a little austerity. But by doing austerity, we will get purification, and by that purification, we will get real pleasure. तो ये तपस्या है थोड़ी सी, और इस प्रकार से तपस्या करके हम शुद्ध होते हैं, और जब हम शुद्ध होते हैं तो वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। This is taught in Srimad Bhagavatam. Lord Rishabdev was preaching to his 100 sons, and he told them the importance of doing a little tapasya. ये उद्देश्य श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। महाराज ऋषभ देव द्वारा वो अपने 100 पुत्रों को आदेश दे रहे थे और वो तपस्या का महत्व बताते हैं उस समय। By tapasya, that what is that tapasya? No meat, fish, and egg. No chai, no coffee, no bidis. क्या है वो तपस्या? मांस मच्छी अंडा नहीं खाना, चाय नहीं पीते, कृष्ण प्रसाद खाओ। For 1 month, make it a habit. This way, you can get rid of a lot of other bad habits. ये आदत बना दो एक महीने के लिए कृष्ण प्रसाद लेंगे, और इस प्रकार से आप गलत आदतों से बच सकते हो। And chant the holy name every day, regularly, minimum 16 rounds. और प्रतिदिन हर रोज भगवान के पवित्र नामों का जप करो, कम से कम 16 बार।
So during this month of Kartik, many devotees, they make a vow during this month. This very, not maybe they don't do it for 4 months, but at least for the last month, this Kartik month, very special. And they make a vow to chant at least 16 rounds and to follow the principles. No meat, fish next, give up all the bad things. And when they do that, this way, they make a lot of progress, they make very good advancement. इस प्रकार से कई भक्त हैं, वो ये 1 महीने, चतुर्मास्य के सब महीने नहीं, लेकिन कम से कम ये 1 महीने व्रत करते हैं कि वो 16 मालाओं का जप करेंगे, मांस मच्छी इत्यादि नहीं खाएंगे, और ऐसा करके वो तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं. So just by doing these things, we show a good example to other people as well. We worship Lord Damodar, we offer the light. Now some people, they don't have any faith. They don't do these things. I was in Calcutta before I came here. I came from Calcutta, and in Calcutta, just that the night before I came here, we went out and we did Damodar Puja in the street. And many people, hundreds of people all came to get prasadam and to offer a life to Damodar. तो केवल जब हम ये कार्य करते हैं, इससे दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव होता है, उन्हें भी हम प्रभावित कर सकते हैं. तो महाराज कह रहे हैं यहाँ आने के पहले वो कोलकाता में थे, कोलकाता से यहाँ आए, और कोलकाता में उनके आने के पहले वाले रात में एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ उन्होंने सड़क में, रास्ते में सभी को दीपदान, बहुत लोग आए भगवान को दीपदान करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए. So some people don't do it, but if they just see other people do it, they get a lot of benefit. Just seeing other people do it, they get benefit too. तो कोई लोग खुद ये काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को यदि देखते हैं ये करते हुए, तो भी उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है. There's a well-known story which comes in the Puranas. It tells about this one man. He was a sinful person. He was doing things like selling animal skins and bones. But somehow, he, just by chance, he came to a place during the month of Kartik, and he saw all the people doing all their puja. पुराणों में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आती है इस विषय में. एक आदमी था, वो बहुत पाप कार्य करता था, जानवरों की चमड़ी से चीजें बना के बेचता था. तो एक बार ऐसे हुआ कि वो एक स्थान